तो पॉइंट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। शाबाश। आप बात को अच्छे से नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत टेक्निकल है ये। इफ द शेयर्स held by the transferee company in the transfer company if shares held by the transfer company in the transferee company exceed 1/10, ध्यान से एक एक बात को नोट करना, 1/10 of the aggregate paid up share value of the total shares of the transferor company देखो ध्यान से सुनो क्या कर रहे। इफ द शेयर्स हेल्ड बाय द transferee company in the transferor company exceed 1/10 of the aggregate paid up share value of the total shares of the transferor company, then the scheme or contract should be approved by at least 3/4 in number of members. Three-fourth in number of members holding at least 9/10 value in value of the shares. ठीक है बेटा, 8 और 9 को इकट्ठा डायग्राम बना रहा हूं बेटा, 8 और 9 का इकट्ठा डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रांसफरर कंपनी in transferee company
शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रांसफरर कंपनी इन ट्रांसफरी कंपनी। शाबाश, आप ध्यान देना बेटा, बात की तरफ ध्यान देना। शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रांसफर कंपनी इन द ट्रांसफरी कंपनी। exceed 1/10 exceed 1/10 of the aggregate paid up value। and do not exceed of the do not exceed 1/10 of the aggregate paid up share value। अगर ये केस है देन रेफर पॉइंट नंबर 8। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपने ये वाला अजम्पशन लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया है, अगर ये वाला केस है तो रेफर पॉइंट नंबर 9, और जनरल क्वेश्चन आया है तो दोनों पॉइंट को लिख कर आओ। रेफर पॉइंट नंबर 9। अगर शाबाश, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर है और साइलेंट है बेटा, साइलेंट है क्वेश्चन, तो आप पॉइंट नंबर 8 के हिसाब से कैलकुलेशन करना, और अगर स्पेसिफिकली दिया है तो पॉइंट नंबर 9 को रेफर करना। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो दोनों पॉइंट लिखना। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि अगर ट्रांसफरर कंपनी ने ऑलरेडी 1/10 से ज्यादा वैल्यू ले रखी है तो दो चीजें इंश्योर करनी होंगी। यहां एक चीज इंश्योर करनी होती थी, यहां दो चीजें इंश्योर करनी होंगी, ठीक है। यहां तो क्या इंश्योर करते थे कि यू हैव टू ऑब्टेन 9/10 शेयर्स, ठीक है, विद इन 4 months। लेकिन यहां आपको दो चीजें इंश्योर करनी है कि एक तो 3/4 मेजोरिटी आपके पास हो, एक तो 3/4 मेजोरिटी हो और 9/10 वैल्यू हो, ठीक है बेटा। यानी 9/10 वैल्यू 3/4 मेजोरिटी, ठीक है बेटा। यानी 3/4 मेजोरिटी जो लोग, ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनना, जो रिमेनिंग शेयर्स हैं, ठीक है, उसकी 9/10 वैल्यू आपने इंश्योर करनी है। यू हैव टू इंश्योर टू थिंग्स। फर्स्ट 3/4 मेजोरिटी एंड सेकंड 9/10 वैल्यू, ठीक है। दोनों चीजें आपको इंश्योर करनी है, 3/4 मेजोरिटी भी इंश्योर करनी है और 9/10 वैल्यू भी इंश्योर करनी है। ये है पॉइंट नंबर 9, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 8 और 9 को मिलाकर पढ़ना है। कोई भी डाउट है जरूर मुझसे पूछना है।
ठीक है सर, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आप इसको बेटा अच्छे से पढ़ कर आना, ठीक है। 9 पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे एक बारी, ठीक है। एक बारी 9 पॉइंट दोबारा से देख लीजिए। इफ द शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रांसफर कंपनी in the transfer company exceed 1/10 of the aggregate paid up share cap value of the total shares of the transfer company, then the scheme or contract should be approved by the at least 3/4 in the number of the members holding at least 9/10 value in the shares. हाँ, थोड़ा सा और इसमें एक दो लाइनें और मैं मिस कर गया हूं, वो आप भी लिख लीजिए, शाबाश। whose ट्रांसफर इज इन्वॉल्व, कौन से शेयर, हुज ट्रांसफर इज इन्वॉल्व। हुज ट्रांसफर इज इन्वॉल्व and further देखो बेटा, ट्रांसफरी कंपनी offers the same transferor company offers the same terms to all holders of the shares. Whose transfer is involved. Only then transferee company can take benefits of section 395 of कंपनीज एक्ट 1956। आपने 8 और 9 को आपने मिला के पढ़ना है। 8 और 9 अलग बात नहीं कह रहे हैं। 9 सिर्फ ये कह रहा है कि जब 1/10 वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, ठीक है बेटा। देखो, पॉइंट नंबर 8 को और पॉइंट नंबर 9 को आपने इकट्ठा पढ़ना है। 8 और 9 अलग नहीं है। 9 सिर्फ ये कह रहा है कि जहां पे 1/10 वैल्यू ऑलरेडी हेल्ड कर रखी है, तो जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उनकी 9/10 वैल्यू आपने एक्वायर करनी है। लेकिन वो 9/10 वैल्यू के साथ मेजोरिटी शेयर 3/4 मेजोरिटी भी इंश्योर करनी है। दो चीजें इंश्योर करनी है, 3/4 मेजोरिटी और 9/10 वैल्यू। अगर 1/10 से कम है, अगर 1/10 से वैल्यू कम है, तो आपको सिर्फ 9/10, शाबाश। पॉइंट नंबर 8 को फिर आपने कैलकुलेशन करना है। अगर 9/10 वैल्यू रिमेनिंग शेयर होल्डर्स की 9/10 वैल्यू कंपनी एक्वायर कर लेगी, तो टेक ओवर हो जाएगा कंपनी का, ट्रांसफर कंपनी का टेक ओवर हो जाएगा।